Good morning, all. Let us start today with a very important quote. I'll start the class with a very important quote. This is by Winston Churchill. What is this quote? What is this quote all about? Let me share it. Okay, what is this quote all about? Let me write it. According to Winston Churchill, what he said once, if you are going through hell, if you are going through hell, keep going. Then what you should go? What you should do? Keep going. All right. This is by Winston Churchill. If you are going through hell, then keep going. This is the message by Winston Churchill. All right. So with this message, let's start this chilly morning of Sunday. All right. What we are going to discuss today? We are going to discuss today about two important topics. What is the agenda? We'll talk about important festivals first. Then we will talk about the current affairs of first week of November. All right. So let's start the first issue, that is the important festivals of India. All right, friends, let us start and remain focused. All right, we are going to start with important festivals of India. That's very important. Okay, you will find questions from important festivals. I have picked up some very relevant festivals which are time and again asked, जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं. उसी तरह के फेस्टिवल्स सारे मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं. ऑल राइट, सो लेट अस स्टार्ट फर्स्ट. दिस इज द फर्स्ट फेस्टिवल. ओके, आई हैव गिवन इमेजेस. मैं इमेज आपको दिखाऊंगा. यू जस्ट हैव टू, व्हाट यू नीड टू डू, you just have to guess what is this festival all about. Okay, now you can see a bonfire here. A huge amount of fire is burning. तो ये जो फेस्टिवल है ये क्या है? दिस इज कॉल्ड भोगी. ऑलराइट, दिस इज द फेस्टिवल ऑफ भोगी. ये भोगी कहाँ का फेस्टिवल है? दिस इज द फेस्टिवल विच इज सेलिब्रेटेड इन द सदर्न इंडियन स्टेट लाइक तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना. ऑलराइट, so this is भोगी, very important festival of southern India. ओके, अब इसमें होता क्या है? व्हाट दे यूज्ड टू डू, मतलब थ्रू आउट द ईयर वट एवर ट्रैश दे हैव एक्यूमुलेटेड, वो जो कचरा कचरा होता है वो सब एक्यूमुलेट करते हैं, इंक्लूडिंग ओल्ड वुडन फर्नीचर. दे बर्न all of them. It is actually associated with negative energy. मतलब they used to discard negative energy at one point of the year. All right, so this is Bhogi. Number two is a festival which is time and again asked in the exam. ये क्या है? You can see a group of women are dancing around a group of flower bouquet. ये क्या है? This flower bouquet, this festival is called Bathukama. It is celebrated during Dashera. Okay, नवरात्रि के टाइम में ये सेलिब्रेट होता है. तो बथुकम्मा इज अ फेस्टिवल इन तेलंगाना. रिमेंबर, बथुकम्मा बार बार एग्जाम में पूछा गया है. इट इज सेलिब्रेटेड इन तेलंगाना. बथुकम्मा, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. बथुकम्मा. ऑलराइट, नाउ दिस इज यू कैन सी अ काइट इन द स्काई. ये जो काइट है स्काई में, यहाँ पर आप देख सकते हो. ओके, तो ये फेस्टिवल क्या है? दिस इज कॉल्ड मकर संक्रांति. बट व्हाट इज द यूनिक क्वेश्चन दैट यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस साइड? मकर संक्रांति के अलग अलग नाम, जैसे इट इज कॉल्ड माघी संक्रांति इन नेपाल. सी द सेम फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन डिफरेंट नेम्स, अलग अलग एरियाज में. माघ बिहू बोलते हैं इसको असम में, माघी बोलते हैं कहाँ पर? पंजाब में, या तो लोहरी यू कैन से. थाई पोंगल बोलते हैं तमिलनाडु में, घुघुटी बोलते हैं उत्तर प्रदेश में, और खिचड़ी संक्रांति बोलते हैं उत्तर प्रदेश में. ऑलराइट, सो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट? आई एम टॉकिंग अबाउट द मकर संक्रांति. ऑलराइट, so why it is Makar Sankranti? But because at the same time the sun is overhead at the Makar, there is a tropic of Capricorn in the southern hemisphere. All right, so this is Makar Sankranti. Next, let's talk about this festival. In this festival, women in the community, they used to cook food outside their home. You can see a group of women are cooking food outside their home. ये festival जो है, it is called Pongal. पोंगल बार बार एग्जाम में पूछा गया है, बिलीव मी फ्रेंड्स. ये कहाँ सेलिब्रेट होता है? तमिलनाडु में. राइट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड थाई पोंगल और ताई पोंगल.
as we have already discussed, it is celebrated during Makar Sankranti. Okay, so it has three variants. देखिए, Bhogi Pongal, Surya Pongal, and Mattu Pongal. This is one. This is number two, Surya Pongal. Number three is Mattu Pongal. All right, so this is about Pongal. Next one. Next one. You see, Lord Kartikeya is holding a spear in his hands. तो ये जो फेस्टिवल है, you can see a huge gathering here. लोगों की बहुत ज्यादा गैदरिंग आप देख सकते हो यहाँ पर. Alright, so this is called Thai Pusam. Thai Pusam, that is in Tamil Nadu. Okay, this is Thai Pusam that is celebrated in Tamil Nadu. Remember, Thai Pusam in Tamil Nadu. Okay, next one. You all may be knowing it. This festival is the festival of colors. This is Holi. Okay, this is festival of colors, that is the Holi. Next one. ये वाला जो फेस्टिवल है, you may be guessing, ये जो है, it is ये घोड़ा नाचो या ऐसा कुछ डांस है, but it is not so. घोड़ा नाचो is celebrated in Odisha, but it is basically celebrated. It is called Shigmo festival. Friends, this is another important festival. Mark it as important. Shigmo festival, right? Where is Shigmo festival celebrated? It is celebrated in Goa. ये बार-बार एग्जाम में पूछा गया है Shigmo festival. All right, Shigmo festival is celebrated in Goa. Next, it's a local festival. The image that you can see, ये image इसका है. This is called Gangor. Gangor is a festival celebrated in Rajasthan. Okay, Gangor is a festival which is celebrated in Rajasthan. All right, this festival that is on your screen now. This is Gangor. All right, this is celebrated in Rajasthan. Okay, next on your screen, it's a festival related to Ram Navami. It is a festival related to Ram Navami. All right, we are going to witness a grand temple at Ayodhya on the Babri Masjid site. Okay, so friends, take it as a homework. What is the homework? Now, Babri Masjid issue. Babri Masjid issue को आप थोड़ा देखना. Right from 1993 when it was demolished. Okay, later अभी जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था, उस टाइम में टोटल इसको एक बार रफली एनालाइज कर लेना. Next one, you can see this festival is very famous in the Western India, that is Maharashtra. Okay, it is called Gudi Padwa. You see, it is on the screen now. This festival, yes, this one is called Gudi Padwa. The festival which is on your screen now, it is called Gudi Padwa. Okay, it is celebrated in the western part of India, that is by the Marathi community. Gudi Padwa is the new year of Marathis. Okay, next one is also a new year, that is the Ugadi. Okay, Ugadi is the new year of the Telugu and Kannadigas. Kannadigas in the sense the people of Karnataka, and Telugu in the sense Kerala, in the sense Andhra Pradesh and Telangana. Okay, so ये celebrate होता है न्यू ईयर के हिसाब से, उगाड़ी. Next one, you see, this is a festival in Kerala. ये festival क्या है? What is this festival all about? It is called Vishu. Vishu is a festival which is celebrated in Kerala. Remember, Vishu is an important festival celebrated in Kerala. Okay, maybe a question in the exam. Next is a festival which is called Puthandu. You see this festival that is on your screen now, you can see. All right, this is called Puthandu. Puthandu is a Tamil New Year. Puthandu is the New Year of Tamil. That is, it is celebrated in Tamil Nadu. All right, next one. Next on your screen, see, this is Puthandu. Puthandu is a Tamil New Year. Okay, we have already seen 3 New Years. One is for Marathi, that is the Gudi Padwa. Then we had the for Karnataka, okay, Ugadi and Puthandu. Next on the screen we have Bihu. Bihu is a very popular festival in Assam. Okay, Bihu is a dance form as well as a festival. So it has basically 3 forms of Bihu: Rongali Bihu or Bohag Bihu, Kongali Bihu or Katti Bihu, and Bhogali Bihu. These are observed in different parts of the year. Rongali Bihu in April, Kongali Bihu in October, and Bhogali Bihu in January. So it's a very important festival in Assam. Bihu, you may be knowing it, but इसके variants जो हैं इनको थोड़ा
एक बार देखना. All right, next we have another important festival that is called Bonalu. Bonalu is a festival which is celebrated in Telangana. Okay, तेलंगाना का एक और फेस्टिवल हमने देखा था. You see on the screen, this is Bonalu festival. Okay, Bonalu it is a festival related to goddess Mahakali. तेलंगाना में एक और फेस्टिवल याद करो, बथुकम्मा. That was also in Telangana. All right. So Bonalu and Batukamma, both of them are celebrated in Telangana. All right. Both of them are celebrated in Telangana. Okay. Next on your screen is the Chariot Festival or Rath Yatra. We know it well. Okay. So no need to discuss it. Chariot Festival that is celebrated in Odisha. Okay. Next is also a very important festival of Odisha. On your screen now is the Raja Parva. Okay. Raja Parva that you can see on your screen, that is also important in, yes, this one is Raja Parva. Okay, that is in Odisha. Next one is Onam. See friends, this is a very common question of exam. Onam is a festival in Kerala. Okay, this is a very important festival in Kerala, right? In Kerala, I tell you, there is another festival that is called Thrissur Puram. Thrissur Puram festival, इसको थोड़ा लिख लेना. ओके, थ्रिसुर पुरम फेस्टिवल इस बार कोरोना की वजह से इसको अबैंडन करना पड़ा. आई मीन दे हैड टू पोस्टपोन इट. ऑलराइट, so Onam. Next we have Raksha Bandhan, that we all know. Okay, we are actually discussing the festivals and celebrations in India. Okay, इसके बाद जो फेस्टिवल आता है, ये वेस्टर्न उड़ीसा का एक फेस्टिवल है. ये फेस्टिवल क्या है? दिस इज कॉल्ड नुआखाई. Nuakhai is a very common festival in western part of Odisha. Nuakhai in the sense, at that time वो जो हार्वेस्ट होता है, वो जो नया वाला चावल आया हुआ था, उसको कुक करके मतलब प्रसाद बनाते हैं. ओके, नेक्स्ट is an important festival in western India. There is Navratri. Navratri is a Hindu festival in western part of India or in other parts of India as well. Next we have Durga Puja. Yes, this is on your screen is Navratri. Okay, Navratri is in India. Next is Durga Puja. Durga Puja is celebrated in different parts of India, the same time period. Okay. Next we have the upcoming Diwali. Deepavali, which symbolizes victory of light over the darkness, good over evil, knowledge over ignorance. Okay, so this is a festival of light. Next important festival. Yes, just after Deepavali, we will witness this festival. This is the Chhat Puja. This is very popular in the region of Bihar, Jharkhand, some parts of Uttar Pradesh, some parts of Assam, West Bengal. Okay, it's basically very popular in Bihar. Okay, Chhat Puja, it is dedicated to the god Sun and Sashti Devi. All right. Next, you can see a huge gathering along the bank of a particular river. ये river कौन सी है? Perhaps it is the Ganga river. All right, we are talking about a festival which is held once every 12 years. Okay, we have to see this as a festival which is celebrated once in 12 years. This is called Kumbh Mela. All right, so friends, if you can take it, then take it as a homework. What is the homework? Homework हो गया क्या? Kumbh Mela. Kumbh Mela, actually, it is celebrated in 4 places. It is observed in 4 different places of India. Okay, along 4 different banks of rivers. All right, so my question is very easy and my homework is very easy. ये क्या है? कुंभ मेला. थोड़ा एक बार आप इसको सर्च करना. ये कहाँ सेलिब्रेट होता है, कितने साल में एक बार सेलिब्रेट होता है, एंड फाइनली कौन से रिवर के किनारे पर कुंभ मेला सेलिब्रेट होता है. नेक्स्ट, फाइनली वी हैव another important festival at the end of the year, that is Christmas. All right, Christmas. So the birth of Jesus Christ, and we have, you can see on your screen, Christmas, the birth of Jesus Christ. All right, next we have Eid. Eid is an important festival of the Muslim community. Okay, so at the background you can see the very famous that
द जामा मस्जिद एट दिल्ली। ओके, जामा मस्जिद बच्चों किसने बनाया था? हु कंस्ट्रक्टेड दिस जामा मस्जिद विच इज इन दिल्ली? हु कंस्ट्रक्टेड दिस जामा मस्जिद विच इज इन दिल्ली? ऑलराइट, नेक्स्ट ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ आप देख सकते हो द स्टैच्यू ऑफ भगवान बाहुबली। दिस इज द गोमतेश्वर स्टैच्यू। राइट ऑन योर स्क्रीन नाउ, दिस इज द गोमतेश्वर स्टैच्यू। Gomateshwara statue, which is in Karnataka. Okay, and this festival is known as what? This festival is known as Mahamastakabhisheka. This is the Mahamastakabhisheka, which is held in held in after every 12 years. Okay, so last Mahamastakabhisheka was in the year 2019. Okay, so you should remember it. 12 साल में सेलिब्रेट होने वाला ये एक और फेस्टिवल है. Alright. So lastly, we have another festival which is not of Hindus, of course. ये हिंदुओं का फेस्टिवल नहीं है. It's a festival of the Parsis. Okay, remember this thing. It's a very unique question of the exam. Nowruz. Nowruz is a New Year festival of which community? Parsi community. Okay, और else question उल्टा भी पूछ सकते हैं वो लोग. Parsi New Year किसको बोलते हैं? Nowruz is also known as Parsi New Year. Alright, Nowruz is the Parsi New Year. Okay, so if I can give you as a homework, इसको अगर homework के हिसाब से ले सकते हो, so search this Parsi community. What is this Parsi community? What is the old name of Parsi community? Alright, Parsi community is very minority in India. Alright, so this ends the first part of it. We have completed the first section of today's agenda. Let's go to the second one. Alright, we are going to discuss about the current affairs 1st November. November first week current affairs discuss करते हैं. Alright, if you know the answer then tell me, otherwise we will have a comprehensive analysis of all the questions. चलिए, in which state did Prime Minister Modi, the first question, in which state did PM Modi inaugurated Children Nutrition Park dubbed as world's first? Yes, Manisha, you got the right answer. Jama Masjid was built by Shah Jahan. Alright, it was built by Shah Jahan. Okay, now if I can ask you, before knowing the answer, if I can ask you, which is called Taj of Deccan, which is called the Taj of the Deccan, who can tell me which is called the Taj of Deccan? Very unique question, very easy question as well, right? We have a Taj Mahal at Agra that we all know, but which is called the Taj of Deccan, right? South India में भी एक ताज है, which is the replica of the original Taj Mahal, which is called the Taj of Deccan. All right, so I'm moving to the question. In which state PM Modi inaugurated a children nutrition park dubbed as the world's first such technology-driven theme park with an area of 35,000 square meters? तो ये कहाँ बना था? Who can answer it? ये कहाँ बना था? ये वाला जो पार्क था ये कहाँ बना? Who can answer this question? इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया गुजरात. ओके, ये कहाँ बना? दिस वाज इन गुजरात. ऑलराइट. Recently, Prime Minister Modi visited Gujarat and he inaugurated different projects in Gujarat. Next one. According to Public Affairs Index released by the Public Affairs Center, which state was adjudged as the best governed state in the country? Best governed state. Alright. So ये state कौन सा था? If you know the answer, it is Kerala. This is the state. This is the state which is called Kerala. Okay. Next one. According to Annual State Education Report or as of 2020. As of 2020. Which state occupied the top position in the decline of dropout rate among school students during 2018-2020? Okay. मतलब किस स्टेट में स्कूल ड्रॉपआउट्स, किस स्टेट में स्कूल ड्रॉपआउट्स का रेट कम हुआ है? ऑलराइट, सरप्राइजिंगली द स्टेट इज उत्तर, इट इज वेस्ट बंगाल. ओके, वेस्ट बंगाल में अभी एजर रिपोर्ट के हिसाब से वेस्ट बंगाल में ड्रॉपआउट रेट जो है वो कम हुआ है. ऑलराइट फ्रेंड्स, आई आस्क्ड यू अबाउट द ताज ऑफ डेक्कन. ताज ऑफ डेक्कन ये कहाँ पर है? क्या वो आंसर नहीं मिला? ताज ऑफ डेक्कन, सर्च इन द सदर्न स्टेट. इज इट इन महाराष्ट्र? ये महाराष्ट्र में है क्या ताज ऑफ डेक्कन?
Search it and tell me. Okay, so let's move on. Now, which of the following developed a simple messaging application named oh, pardon me for this. Unmute म्यूट हो गया था. ऑलराइट, जो जो मैंने बताया वो फिर से लिख देता हूँ. ऑलराइट, आई टॉक्ड अबाउट, वी टॉक्ड अबाउट व्हाट, वी टॉक्ड अबाउट जिंदा पीर, हु इज कॉल्ड जिंदा पीर नंबर 1. जिंदा पीर, okay, he constructed बीबी का मकबरा, बीबी का मकबरा. जिंदा पीर, इन्होंने बनाया क्या? बीबी का मकबरा. मैं आपको बहुत सारे सरप्राइजिंग क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप इनके आंसर खोजना. ऑलराइट, सो ही कंस्ट्रक्टेड बीबी का मकबरा, दिस इज कॉल्ड द ताज ऑफ डेक्कन. लेकिन ये कहाँ पर है? वेयर इज ताज ऑफ डेक्कन? अभी भी मेरे क्वेश्चन का आंसर किसी ने नहीं दिया. बीबी का मकबरा, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र. यस, ऑलराइट, रिमेंबर दिस इज अ वेरी क्रूशियल क्वेश्चन ऑफ एग्जाम. ओके, यहाँ पर मैंने जो जो लिखा है, जैसे हु इज कॉल्ड जिंदा पीर, हु कंस्ट्रक्टेड बीबी का मकबरा, वेयर इज इट. ऑलराइट, सो क्वेश्चंस लाइक दिस. थोड़ा एक स्टेप आगे जाके हमको सोचना पड़ेगा. ऑलराइट, क्योंकि वो लोग क्वेश्चन भी वैसे ही पूछ रहे हैं. ओके, तो साई किसने डेवलप किया? हु डेवलप्ड दिस साई? इट वाज डेवलप्ड बाय इंडियन आर्मी. ऑलराइट, इट वाज डेवलप्ड बाय इंडियन आर्मी. ऑलराइट, वेरी इजी. चलो, now with which country was a joint commission meeting held through video conference which discussed further work on strengthening their privileged partnership? अब ये कंट्री कौन सी थी? हु नोज दिस आंसर? ये कौन सी कंट्री के साथ अभी ये पार्टनरशिप हुई थी? ये कौन सी कंट्री थी? दिस वाज बेसिकली मैक्सिको. ओके, दिस कंट्री वाज मैक्सिको. ये कंट्री कौन सी थी? मैक्सिको. ऑलराइट, इफ यू रिमेंबर, मैक्सिको से एक इंसान था जिसने क्या किया था? ही डेवलप्ड द HIV सीड्स. लेट मी राइट इट क्लियरली. ये इस इंसान ने, दिस मैक्सिकन पर्सन, ही डेवलप्ड HIV, he developed this HIV seeds. He developed this HIV seeds. Okay, who was this person? Who was this person who developed HIV seeds? Friends, it's a very important question of exam. HIV seeds किसने develop की थी? Who is the person? Okay, so regarding the answer, it is Mexico. Next one. Which Indian institute, along with Archaeological Survey of India, signed an agreement with two institutions from Italy seeking the restoration of and protection of historical monuments? तो अब इंडिया में से किसने इनके साथ टाइप किया है इंडिया के हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए? इफ यू नो द आंसर, इट इज आईआईटी रुड़की. ओके, व्हाट इज द आंसर? इट इज आईआईटी रुड़की. ऑलराइट, आईआईटी रुड़की ने इसको यहाँ पर एमओयू साइन किया है. ऑलराइट, बट इफ आई आस्क यू, विच इज द ओल्डेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज इन इंडिया ब्रिटिश के टाइम में? नंबर 1. ओके, एंड नंबर 2, व्हाट इज द ओल्ड नेम
of IIT Roorkee? What is the old name of IIT Roorkee? ओके, तो ये दोनों है। एंड देयर इज अ थर्ड क्वेश्चन एज वेल, वेयर इज IIT Roorkee? ये IIT Roorkee कहाँ पर है? ओके, एक ही इश्यू से मैंने आपको तीन अलग अलग क्वेश्चन पूछे हैं। आई होप यू कैन आंसर इट। नेक्स्ट वन, ए यूनिक प्लास्टिक प्रीमियर लीग इन लाइन विथ इंडियन प्रीमियर लीग कहाँ पर अभी खेला गया है? दैट इज इंदौर। ओके, लोगों को अवेयर करने के लिए प्लास्टिक कितना हार्मफुल है। ऑलराइट, सो इंदौर में खेला गया प्लास्टिक प्रीमियर लीग। ऑलराइट, नाउ इफ आई कैन आस्क यू, इंदौर कहाँ पर है? Manisha, you are correct. MS Swaminathan is related to HYV seat. You are correct. But I asked you what? I asked you about Mexico. Mexico. MS Swaminathan, he imported HYV seed. All right. There is a difference. उन्होंने HYV सीड बनाए नहीं थे, उन्होंने इंपोर्ट किए थे। कहाँ से? मेक्सिको से। लेकिन ये HYV सीड के जो जिसने बनाया था वो इंसान कौन है, मैं आपको वही बताना चाहता हूँ। हु इज दिस पर्सन हु डेवलप्ड द HYV सीड? इनका नाम क्या था? ओके, मैं आपको हिंट दे देता हूँ। उनके नाम के दो लेटर एन एंड बी। दिस पर्सन वाज एन बी। ओके, तो आप इस हिसाब से सर्च करो, हु डेवलप्ड HIV सीड। ओके ना, चलो इंदौर। इंदौर से रिलेटेड इफ आई कैन आस्क यू, इंदौर कहाँ पर है? वेयर इज इंडिया, वेयर इज इंदौर, नंबर वन। एंड विच इज द फाइनेंशियल कैपिटल, विच इज द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश? ये दो क्वेश्चन मैं आपको पूछ रहा हूँ। ऑलराइट, वेयर इज इंदौर, number two, which is the financial capital of Madhya Pradesh? Okay, next one, which bank has entered into a strategic partnership with the global NPO platform edX, where the bank will offer its massive open online courses on the platform? तो ये बैंक कौन सा था? What was this bank? What is the name of this bank? ये कौन सा बैंक था? This was the State Bank of India. This was the State Bank of India. All right, next one. Now, what is the theme of World Cities Day? What is the theme of this year's World Cities Day? World Cities Day, it is observed on 31st of October. अब इसका थीम क्या हो गया? थीम हो गया वैल्यूइंग आवर कम्युनिटीज एंड सिटीज। ओके, वैल्यूइंग आवर कम्युनिटीज एंड सिटीज, इट इज observed on 31st of October. Okay, next one. Now, this is a very important question. Now, Fehmarn Belt Tunnel. Fehmarn Belt Tunnel, world's longest immersed tunnel, will link Denmark and which country? आप अगर डेनमार्क और इस कंट्री को देखो, देयर इज अ सी इन बिटवीन। ओके, देयर इज अ सी इन बिटवीन। तो बेसिकली दिस विल कनेक्ट डेनमार्क एंड जर्मनी। लेकिन डेनमार्क और जर्मनी के बीच में लैंडमास तो नहीं है, है क्या? एक सी है। ऑलराइट, व्हिच इज द सी? व्हाट इज दैट सी? इट इज द बाल्टिक सी। ओके, मतलब बाल्टिक सी से नीचे नीचे ये जो प्रोजेक्ट आएगा, it will be अंडर वाटर टनल बाल्टिक सी। ओके, दैट मीन्स यहाँ पर दिस इज द डेनमार्क एंड दिस इज जर्मनी। डेनमार्क एंड जर्मनी के बीच में ये जो सी है, दिस इज कॉल्ड द बाल्टिक सी। ओके, ये बाल्टिक सी से, बाल्टिक सी के नीचे नीचे से, मतलब ये ऐसे एक टनल आएगा यहाँ से। ऑलराइट, नाउ दिस टनल विल बी द लॉन्गेस्ट टनल एंड इमर्स टनल इन द वर्ल्ड। ओके, नेक्स्ट वन। सो दिस इज जर्मनी। तो डेनमार्क और जर्मनी को कनेक्ट करेगी क्या? फैन बेल्ट टनल। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, विच बैंक लॉन्च्ड इंस्टेंट पे आउट्स फॉर फिनटेक फर्म्स बाय पार्टनरिंग विद पेमेंट जायंट वीजा? इनमें से किसने इसके साथ टाई अप किया हुआ है? व्हाट इज द आंसर? नाउ इट वाज बेसिकली द RBL बैंक। RBL बैंक has tied up with them. This is RBL bank. Okay, next one. How much growth fund has been announced by PNG India to give hand to the government's vision to self-reliant economy? हाँ, yes, Manisha, you are correct. HYV seeds are developed by a person which is called Norman Borlaug. This is the person who developed HYV seed, and he was from which country? He was from Mexico. Remember? Okay, and this question is frequently asked in the exam, ki who is called the father
Who is the father of Green Revolution? Who is the father of Green Revolution? He is none other than Norman Borlaug. Okay, father of Green Revolution in the world is Norman Borlaug. Remember, of Green Revolution in India. इंडिया में कौन है? इंडिया में है एम एस स्वामीनाथन. इंडिया में एम एस स्वामीनाथन, वर्ल्ड में नॉर्मन बोरलॉग. ओके, केयरफुली क्वेश्चन को पढ़ना और उस हिसाब से आंसर करना. ऑलराइट, नेक्स्ट वन. नाउ व्हाट इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन? पीएनजी ने कितने पैसे इन्वेस्ट किए हैं? 400 करोड़ रुपीस. ओके, नेक्स्ट वन. नाउ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड साइंड a contract worth 400 crore with which country for implementing enterprise resources planning और ERP? अब ये कहाँ पर हुआ है रिसेंटली? किसमें इसने इन्वेस्ट किए हैं? दैट इज इन टेक महिंद्रा. ओके, टेक महिंद्रा, हु ओनर इज आनंद महिंद्रा. ऑलराइट, नेक्स्ट. अमित पंघल, संजीव एंड हु अदर प्लेयर स्ट्रक गोल्ड एट एलेक्सिस वेस्टिन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट? तो ये कौन थे? आशीष कुमार थे. ओके, स्पोर्ट्स के साइड से क्वेश्चन आया है. विच रेसलर वन हर थर्ड कंसेक्यूटिव MMA championship title in Singapore? Okay, the answer is Ritu Phogat. The answer is Ritu Phogat. All right, she won the third consecutive MMA championship. All right, which bank is going to acquire 19% in Max Life Insurance Corporation Limited? This is the Axis Bank. Okay, Axis Bank. Now, if I can ask you, you can tell me what is the old name of Axis Bank? What is the old name of Axis Bank? What is the old name of Axis Bank? All right. Next, which institute has developed world's first biosensor to detect harmful detergent pollutants, sodium dodecyl sulfate और सोडियम लोराइल सल्फेट? ओके, सो ये किसने, जो डिटर्जेंट में एक तरह के पोल्यूटेंट्स होते हैं, दे पोल्यूट द वाटर बॉडी. ओके, तो ये किसने अभी रिसेंटली डेवलप किया हुआ है? Which is this IIT? It is IIT Roorkee. All right, IIT Roorkee recently developed it. Okay, next one. Sean Connery, who passed away, was related to which profession? Friends, this question is from obituaries. All right, and important persons as well. So he was an actor basically. Yes, Sean Connery कौन थे? He was an actor. Next, Dr. Ramarao Maharaj, head of which pilgrimage center, passed away recently? ये कहाँ के थे? पोहरा देवी पीठ. This question is also from obituary side. All right. Now, where did PM inaugurated first seaplane service? I hope you may be knowing it. आपने इमेज भी देखा होगा उसके बाद वाले दिन के न्यूज़पेपर में. All right, न्यूज़ भी सुनी होगी. This was inaugurated in Gujarat. Okay, this was inaugurated in Gujarat. So it was a seaplane service. If you remember, if you go back to 1 year before, there was a seaplane service which was supposed in Chilka Lake. चिलिका लेक में एक प्रपोज्ड सी प्लेन सर्विस था, बट दिस वाज एक्चुअली कैंसल्ड ड्यू टू वाइल्ड लाइफ एंड एक्वाटिक लाइफ के इश्यू के लिए इसको बंद कर दिया गया था. ऑलराइट, सो सी प्लेन सर्विस चालू होना था चिलिका में, बट इट कुडंट टेक ऑफ. ऑलराइट, नाउ हाउ मच अमाउंट हैज बीन अप्रूव्ड बाय कैबिनेट टू इंप्रूव द सेफ्टी एंड परफॉर्मेंस ऑफ सिलेक्ट डैम्स अक्रॉस द कंट्री? हाउ मच इज इट? डैम्स की सेफ्टी के लिए कितना पैसा खर्चा करा जाने वाला है? व्हाट इज द अमाउंट? दिस अमाउंट इज 10,211 crore rupees. 10,211 crore rupees, option number C. Okay, next one. Which state has planned to make a law on wearing masks mandatory to prevent spread of COVID? Okay, to prevent COVID, you have basically two types of protections, friends, I tell you. Number one is a mask. Number two is hand sanitizing. Okay, if you regularly use masks in public places and you use frequent hand sanitizers, or you frequently wash your hands, chances of COVID-19 attacking is very limited. Okay, nearly 99% you will be immune from COVID. All right, so use of mask and hand sanitizing of hands. All right, तो ये
कौन से स्टेट ने अभी इसको मैंडेटरी कर दिया है? द स्टेट इज राजस्थान। ओके, राजस्थान ने इसको मैंडेटरी कर दिया है। ऑलराइट, नाउ हाउ मच अमाउंट ऑफ लोन वाज सैंक्शन बाय नाबार्ड अंडर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड फॉर गोवा? तो इसको जानने से पहले एक बार बता देता हूँ मैं, एग्जाम में बार बार ये पूछा गया है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नाबार्ड? ओके, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नाबार्ड? बार बार पूछा गया है फ्रेंड्स, नो इट। ओके, तो व्हाट इज द फुल फॉर्म? व्हाट इज द फुल फॉर्म? नाबार्ड। नाबार्ड को कैसे याद रखें? NABARD। बच्चे क्या करते हैं, नेशनल एग्रीकल्चर ऐसे चालू करते हैं, है ना? तो देखिए यहाँ पर याद कैसे रखना है, NA स्टैंड फॉर नेशनल, दिस स्टैंड फॉर नेशनल। ओके, N स्टैंड फॉर नेशनल नहीं, NA स्टैंड फॉर नेशनल, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। Okay, NA stands for national, remember, not N. It is NA which stands for national. Alright, so इस तरह से चालू करना तो आराम से you will get the answer. National Bank for Agriculture and Rural Development. So how much amount of loan has been sanctioned? How much amount of loan has been sanctioned? What is the answer? It is 8504.30. Okay, this is option B, 8504.30 lakh rupees. Okay, so this is the answer. Next one. According to the data released by Center for Monitoring Indian Economy, India's unemployment rate in October rose to how much percent? All right, अच्छा बच्चों, as we are taking this class to enhance our knowledge, तो आपको ये चीज करना पड़ेगा। ओके, एक होमवर्क लिख लो। व्हाट इज द होमवर्क? होमवर्क क्या है? टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, आई होप ऑनेस्टली आप ये होमवर्क करोगे। ऑलराइट, देयर आर सेवरल डिफरेंट काइंड्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, जैसे कि टू नेम ए फ्यू, वी हैव नंबर 1 disguised unemployment, number 1. Number 2, we have frictional unemployment. Number 3, we have seasonal unemployment. We have technological unemployment. Okay, so these are some kinds of unemployment, right? तो आपको क्या करना है, इन इन टाइप्स के अनएम्प्लॉयमेंट को आपके बुक में सर्च करना है। ऑलराइट, सो प्लीज सर्च देम एंड प्लीज हैव ए जनरल आइडिया अबाउट ऑल ऑफ द टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। So according to this question, what is the answer? What is the answer here? How much amount of unemployment? It is 6.98. Unemployment rate has been grown to 6.98%. Okay, now BCCI has announced that who will be the title sponsor of Women's T20 Challenge 2020. It will be Reliance Jio. Jio will be the title sponsor. Okay, yes Abhiram, there is a structural unemployment as well. Okay, along with we have the technological, disguised, we have a structural unemployment. Okay, so एक लिस्ट बना ला उसका पूरा। who has been appointed as CEO of Electronic Sector Skill Council of India? Who is the answer? What is the answer? Who is the CEO of Electronics Sector Skill Council of India? Who is the CEO? It is PVG Menon. It is PVG Menon. Option D, PVG Menon is the answer. Next, which company acquired Freshly, a startup that offers healthy meals? तो ये किसने अभी acquire कर लिया? It is a USA based company, that is Nestle. Alright, Nestle ने इसको acquire कर लिया। Okay friends, do you know what is the full form of FMCG? Because Nestle is a FMCG company. What is the full form of FMCG? Now, when is the World Thrift Day? अभी थ्रिफ्ट डे क्या होता है? ये थ्रिफ्ट डे क्या होता है? टू एनकरेज द हैबिट ऑफ सेविंग्स। थ्रिफ्ट डे, somebody just spend thrift, मतलब क्या है? वो उल्टा है, मतलब वो बहुत ज्यादा पैसा खर्चा करता है। somebody is a thrift person, तो वो that means what? He is actually in an intention of saving something. Okay, so it is observed on 31st of October, the thrift day. Okay, next one. When is World Vegan Day? World Vegan Day is observed on November 1. Okay, yes Abhiram, you are correct. FMCG stands for fast moving consumer goods. Okay, next, World Vegan Day. Okay, vegetarian और vegan में difference है। Vegetarian people, they can have milk products.
like cheese, paneer and all. Okay, but the vegan people, if you have converted yourself into a vegan, that means you will not eat any animal product, any animal product. Okay, so vegan day, vegans are completely vegetarian, they use only plant material. Okay, so it is observed on, it is celebrated on November 1st. Now where will India's first tire park come up? तो जो अनयूज टायर्स होते हैं ना, उनको यूज करके वो लोग क्या बनाएंगे, एक ना थीमेटिक पार्क बनाएंगे. So it will be coming up in West Bengal. All right. In which city did Chief Justice of India Sharad Arvind Bobde inaugurated India's first e-resource, that is न्याय कौशल? न्याय कौशल कहाँ पर inaugurate हुआ? That is in Nagpur. Okay, it is in Nagpur, right? If you remember, Nagpur is the capital of which state? नागपुर इज द कैपिटल ऑफ विच स्टेट? आप बोलोगे सर नागपुर किस स्टेट का कैपिटल है, हमें तो नहीं पता है, सर्च करो. विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च स्कीम फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोर्टिफाइड राइस? अभी फोर्टिफाइड राइस क्या होता है? फोर्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है? आर्टिफिशियली उसमें कुछ न्यूट्रिएंट्स ऐड करना. ओके, सो विच स्टेट हैज डिसाइडेड कि वो फोर्टिफाइड राइस वगैरह देगा अपने बच्चों को? ये स्टेट कौन सा है? दिस इज छत्तीसगढ़, जहां पर माल न्यूट्रिशन सबसे ज्यादा है. दैट इज द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़. ऑलराइट, छत्तीसगढ़ विल प्रोवाइड फोर्टिफाइड राइस. ओके, तो आपको थोड़ा एक बार सर्च कर लेना है व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ फोर्टिफिकेशन ऑफ राइस. ओके, now how much amount has been provided by the central government to RRBs considering their importance in agriculture? तो ये कितने पैसे RRBs को मिलेंगे इसके अंडर में? is basically 670 crore rupees. Friends, these are actually factual questions. Okay, 670 crore rupees factual question है. I think you can get a hold over this thing. एक दो बार देख लेने से आराम से हो जाएगा. Government is set to offer how much percent of shares in the country's largest non-life company, that is New India Insurance, that is 10%. मतलब 10% शेयर्स का क्या करेगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल इनिशिएट एन IPO. ओके, नाउ व्हाट इज दिस IPO? ये आपको देखना पड़ेगा. ऑलराइट, यस मनीषा, यू आर करेक्ट. नागपुर इज परहैप्स द समर कैपिटल. नागपुर इज परहैप्स द समर कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. ओके, एदर इट इज समर और विंटर, एक बार चेक कर लेना. अच्छा, ये जो IPO है ये क्या है? बार बार एग्जाम में पूछा गया है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IPO? एंड विच इंश्योरेंस कंपनी हैज लॉन्च्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल आइडियाज? अब इसको किसने लॉन्च किया? आइडियाज. Ideas has been launched by which of the following? Ideas has been launched by HDFC Ergo. HDFC Ergo has launched this ideas. All right. So final few questions. Now, in order to develop the sports infrastructure at National Center of Excellence, Itanagar, Arunachal Pradesh government has signed an MOU with which of the following? This is the Sports Authority of India. Okay, sports. Yes, IPO stands for initial public offer. Yes, that's correct. Okay, Sports Authority of India. Friends, who is the chairman? Who is the chairman of Sports Authority of India? Next, who won the Emilia Romagna Grand Prix? अब ये किसने जीता? There are some very popular names in this option जो कि बार बार पूछे जाते हैं. Who is the answer? It is Lewis Hamilton. Lewis Hamilton, he won the Emilia Romagna Grand Prix. Okay, next, Harpreet A. Singh has been appointed as CEO of which Indian Air carrier? All right, so ये जो हरप्रीत देव सिंह है, ये she became the first lady to head such an organization. ये कौन है? She is the head of Alliance Air. Okay, she is the first woman pilot of Air India, has been appointed as the CEO of Alliance Air. Okay, so this is the head of Alliance Air. Lastly, who has been appointed as chairperson of Mumbai Port Trust? ये कौन है? राजीव जलोटा. All right, it is talking about Mumbai Port Trust. So how many major ports? How many major ports are there in India? इंडिया में कितने मेजर पोर्ट्स हैं अभी? ओके, इंडिया में अभी कितने पोर्ट्स हैं?
So that is the question. All right. Acha, friends, before winding up the class, I tell you I am going to ask you 10 important questions. Right. Take down these as homework. If you do them, then you will definitely improve your knowledge. Okay. फटाफट अगर if you are not able to write it, then take a screenshot. All right. I am going to ask you these questions. If you can answer them, I'll be happy. So who is the 46th? Who is the 46th president of USA? Who is the 46th president of USA? That's number one. Okay. Gear up. अपने नोट और पेन निकालो जल्दी और लिखना चालू करो. And if you can answer me, that's very good. Who is the 46th president of USA? That's number one. Number two. When is World Radiology Day? When is World Radiology Day? When is World Radiology Day? Okay. Number three. What are sin goods? देखो मैं जल्दी जल्दी फटाफट पूछ रहा हूँ, आप जल्दी जल्दी लिखो. Okay, what are sin goods? Number four. Okay, which is called Bahubali. Which satellite launch vehicle is also known as Bahubali in ISRO? ISRO के किस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को बाहुबली भी बोलते हैं? ओके, यस, अभिराम एंड मनीषा, यू आर करेक्ट. जो बाइडन, ये तो मुझे भी पता है. ओके, लेकिन रेडियोलॉजी डे कब है? सिन गुड्स किसे बोलते हैं? विच सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इज आल्सो कॉल्ड बाहुबली? ऑलराइट, टेक दिस थिंग्स अप क्विकली. नंबर फाइव, व्हाट इज पराली? ये पराली क्या होता है भाई? विच इज इन न्यूज रिसेंटली फ्रीक्वेंटली. ओके, व्हाट इज पराली? क्वेश्चन नंबर सिक्स, व्हाट इज एयर क्वालिटी इंडेक्स? बच्चों, ये आपका होमवर्क है. ये एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है, ये आपका होमवर्क है. ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 7? व्हाट इज राइट टू रिकॉल? ओके, ये सारे क्वेश्चन मैं आपको न्यूज़पेपर से पूछ रहा हूँ. ऑलराइट, हाँ अभिराम, यू आर करेक्ट. इट इज जीएसएलवी. बट जीएसएलवी का कौन सा वेरिएंट? विच वेरिएंट ऑफ जीएसएलवी इज कॉल्ड बाहुबली? ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 8. विच इज द ओल्डेस्ट ट्रेड यूनियन ऑफ इंडिया? विच इज द ओल्डेस्ट ट्रेड यूनियन ऑफ इंडिया? ओके, यस मनीषा, करेक्ट. रेडियोलॉजी डे जो है वो 8 नवंबर को पड़ता है. लेकिन टेक एन एडिशनल क्वेश्चन. हु इज द फाउंडर ऑफ एक्सरे? एक्सरे किसने निकाला? हु इज द फादर ऑफ एक्सरे? ऑलराइट, लास्ट 2 क्वेश्चन. नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 है विच इज द ओल्डेस्ट ट्रेड यूनियन ऑफ इंडिया? ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 9. वर्ली पेंटिंग which are in news recently. No, Abhiram, I asked which is the oldest trade union. Okay, which is the oldest trade union of India? स्टॉक एक्सचेंज नहीं, ट्रेड यूनियन है ना. अच्छा, वर्ली पेंटिंग जो अभी न्यूज में था, ये दे आर एसोसिएटेड विथ विच स्टेट? वर्ली पेंटिंग आर a uniqueness of which state? All right, question number 10 and the last question of the class, then we will wind up. Okay, Panaji is the capital of Goa, that we know, but Panaji is on the bank of which river? Panaji is on the bank of which river? All right, Panaji is on the bank of which river? Yes, Vishwa Bharati Behra, you are correct. Which is the oldest trade union of India? That is AITUC. Believe me, this was the question of one of the exams. Okay, AITUC. लेकिन extra एक question क्या है? When it was formed? When AITUC or All India Trade Union Congress was formed? All right. See, these questions are there only to improve your knowledge. Okay, yes, Abhiram, you are correct. Panaji is on the bank of river Mandovi. All right. So, friends, before winding up, I must tell you one important thing. Newspaper reading is an indispensable part of your GK preparation. If you are not reading newspapers, तो आप कहीं ना कहीं इस कंपटीशन में पीछे रह जाओगे. रेगुलरली आप न्यूज़पेपर पढ़ो. ऑलराइट, डिवोट सम नियरली हाउ मच? आप कम से कम इसको एक घंटा, दैट मीन्स 60 मिनट्स इसके पीछे डिवोट करो, एंड यू विल फाइंड एस्टोनिशिंग रिजल्ट्स.
ओके, एक दिन में आप 1 घंटा कम से कम इस न्यूज़पेपर के पीछे डिवोट करो, यू विल फाइंड एस्टोनिशिंग रिजल्ट। ऑलराइट, एंड न्यूज़पेपर में भी आपके लिए, मनीषा यू आर करेक्ट, वर्ली पेंटिंग्स आर इन महाराष्ट्र। ओके, आई एम टॉकिंग अबाउट न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर में आपको करना क्या है, यू हैव टू गो थ्रू ए न्यूज़पेपर। हमने डिस्कस भी किया था हाउ टू गो थ्रू ए न्यूज़पेपर इन वन ऑफ द सेशन। ऑलराइट, सो आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट। लेकिन न्यूज़पेपर में यू कैन फॉलो द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस, ओके, टाइम्स ऑफ इंडिया, ये भी हो सकता है। ऑलराइट, और एनी इंग्लिश न्यूज़पेपर ऑफ योर चॉइस, बट रिमेंबर न्यूज़पेपर होना चाहिए इंग्लिश ओनली। It must be an English only newspaper. All right, friends. So these words, let me wind up the class. Thanks so much for your patient participation. I'm so happy you joined the class. All right. So I'm winding it up today. All right. We will meet in the next class. Perhaps tomorrow हम लोग जो classroom preparation है, tomorrow perhaps we will talk about history. On Thursday we will talk about geography, and finally on Sunday we will talk about the current affairs November 2nd week. All right, I will come up with yet another interesting set of questions. Thank you so much for your participation. Thanks a lot. Bye bye all. Okay, take care. Enjoy your Sunday. Okay, bye bye all.